हेलो. हाय. 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 तीन हाई हो गए, तिहाई हो गई. बट हेलो हेलो एंड वेलकम टू. एक सेकंड, इसको वापस करते. आप करो इंट्रो. वेट, एक सेकंड. वी आर लाइव, We राइट? हाँ. are live. We हाँ. are live. ठीक है. ओके. We have a new frame. हाँ. कूल. वी विल डू दिस अगेन. हाँ. Hi Hindol. Hi हेलो. guys. हेलो. हाय. Welcome to DISHAHIN Talks. हाँ, कौन सा एपिसोड आज? एपिसोड 16. काफ़ी काफ़ी आज फील आ रही We are है. on episode एंड 16. या वी आर ऑन, एज पर यूट्यूब वी आर ऑन एपिसोड 16. मुझे यूट्यूब ने कहा होगा तो सही कहा होगा, है ना? तो Mhm. या. एंड टुडे आज आपको नया लेआउट देखने मिल रहा होगा और नया म्यूज़िक सुनने मिला होगा. एंड दिस इज़ बिकॉज टुडे आई एम स्ट्रीमिंग फ्रॉम OBS. तो मैं फाइनली अभी OBS सीख लिया. और आज, हाँ, आज हम दोनों के बाल काफ़ी ख़राब लग रहे हैं, तो ये बैड है स्ट्रीम होने वाली है. सो बट The whole time it's just gonna be us playing with our hair. या. See, in my defense, I just hopped out of the shower, so या. my hair is very. या. What's your excuse, Hindol? My excuse is that there is this new shampoo that I've been using and it is not yielding the best results, so I'm going to stop using that shampoo. So Mhm. yeah, काफ़ी काफ़ी उम्मीदें थी मुझे उस शैम्पू से, but here we are. Oh no. Yeah, never trust anything that you see on the internet, especially with your hair. That's what I've learned. So yeah. Got it. हाँ. But Okay. हाँ. So how have you been? मैं उससे पहले तो आप बताओ, वेयर हैव यू बिन, क्योंकि आई थिंक दैट्स अ गुड सेगवे इनटू I know. व्हाट. या. Yeah. या. A lot of people have been asking me on my Instagram also where exactly am I because I've been uploading a few stories here and there, राइट. but I haven't actually वो location वगैरह मैंने डाला नहीं है कहीं. हाँ. But बता देती हूँ. Or should we like keep it for the end? um, Let people guess where I am. हाँ, ठीक है. तो गिव पीपल क्लूज. गिव पीपल लाइक वन क्लू. ऐसे 15 मिनट में एक एक क्लू देंगे एंड उससे Okay. फिर एंड में गेस करवाते हैं कि कहाँ है. Okay. Do ठीक you है. have any clues in mind? Because I'm not the quiz master here, so ओके. and I have a clue already, but I think it's super obvious. So like वेट. आई I'll text. आई थिंक आई हैव द सेम क्लू इन माई माइंड. We talk. Okay. Is this No, from the world? great. Is it from the world of movies and shows and music? Music. हाँ, म्यूजिक एंड शोज का इंटरसेक्शन है एक. वहाँ उसी वही क्लू है No, ना? then we have two ओके. different. अच्छा, ठीक है. Yeah. हाँ. नहीं, आई वाज गोइंग टू से दैट वेर यू आर उस जगह के नाम पे एक शो है. तो Oh. हाँ, तो वो मेरा क्लू था. बट लेट्स सी. काफ़ी काफ़ी सारी जगह है. Okay. वासेपुर. So that's your first वासेपुर. clue. या That's your first. दैट I वाज don't द think फर्स्ट. that's very long. या. क्योंकि बहुत सारी ये हाँ. है. My हाँ. friend Varun is in the chat and या. he knows where I am, and yet he's spamming different places. Nice, nice. This is the way to go. So yeah, thank you Varun. And जो भी जुड़ रहे हैं यार, सब लोग, you guys know the drill. And if you don't know the drill, then learn the drill, which is that you have to like the stream. And when you like the stream, more people join in, and more people get to join this awkwardness. So here we are. Yeah. Yeah. हम So हमेशा they, यही करते हैं ना. हम ऐसे 3-4 हफ्ते बात करते हैं, फिर बोलते हैं हे गाइस वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. this is the new normal for us. या. If we start streaming regularly, I think everyone would freak out. या. इट विल कॉज अ रप्चर इन द टाइमलाइन कि कुछ तो गलत हो And that गया. is like very on brand for DISHAHIN as well. Like, can you imagine a stream called DISHAHIN actually being regular? या. Mm-hmm. Mm-hmm. नाइस. People, people are actually like trying to guess. नाइस. लेट्स सी. का कुछ अच्छे गेसेस देखते हैं. Wasipur. Yeah, Vasipur is the right answer. Anand Verma. Vasipur is always the right answer, as you can see I behind mean, me. it is a show, so it makes sense. Yeah, yeah. I mean, Vasipur is a way of life, so it's more than a Mhm. show, I guess. So yeah. Yeah. You know, I was laughing so much because I don't know if you caught my story a few days back. I went hiking and I put up pictures from there, and इतने लोगों ने मुझसे पूछा ये महाबलेश्वर है क्या? And the whole time I was like, क्या बोलूं? Should I reply?
So I was just like, huh, Yeah. sure. अगले स्टोरी में से स्ट्रॉबेरीज का गूगल से फोटो उठा के डाल दो. Let people think that it is indeed Mahabaleshwar. So Yeah. yeah. मिलते हैं No, but sometimes I wonder if like I should do that, like just pretend I'm somewhere where I'm not. Yeah, I did that once for work. I lied कि I'm going somewhere but actually I was somewhere else. तो मैंने ऐसे 3-4 फोटोज खींच के रखी थी पहले, तो I just uploaded them as my Insta story कि hey guys, yeah. तो yeah. I Wow, don't that's terrible. yeah, I don't work Yeah. there anymore, so I can say all this shit. So, yeah. Yeah, but I do know about this one girl who told her entire family that she was going on a trip somewhere. I think you must have heard. It's a very famous thing. And she was consistently uploading pictures to her feed of her traveling to all these places. I think she told her family she's in Europe and she'd gone to the US there. Right. And then turns out she was just living next door the whole time. And but apparently it was like a social experiment to show how easily you can fool people on social media. Yeah. And वही है ना, like even when you travel in person as well, the goal is कि आपकी इंस्टा स्टोरी कितनी बन रही है and likes कितने मिल रहे हैं. Because अभी हम पुलका गए थे तो वही होता है ना, दिस इज़ वेरी लाइक क्लीशेड दिस थिंग कि यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट वाली चीज़. बट लाइक एनी सीनिक प्लेस कम्स अलॉन्ग, यू कैन प्रेडिक्ट कि लाइक सबके फ़ोन बाहर आ गए एंड लाइक एवरी वन इज़ ट्राइंग टू रिकॉर्ड देयर वर्जन ऑफ वॉट एवर दे आर सीइंग. तो हाँ, तो बताओ यार आप क्या क्या कर रहे हो. कैन वी रिवील द कंट्री दो, और लाइक हम अभी उस लेवल तक भी नहीं पहुँचे. I don't know, like I'm really enjoying the guesses, so I don't want to reveal the. Okay, we can, but if we reveal the continent, so फिर ये हो जाएगा. नहीं ठीक है ना, अभी अभी अगर खेल रहे हैं, वाइड खेल रहे हैं, तो लेट्स कंफ्यूज एवरीवन. आई थिंक द गोल ऑफ टुडेज स्ट्रीम शुड बी टू कंफ्यूज एवरीवन. दिस इज फाइन. Okay, so should we reveal it or not? नहीं, अभी देखते गेस कर पाते हैं कि नहीं. ठीक है. But आप बताओ, what have you been doing? Are you still in Bombay? It looks like you are in Bombay, but you might not be. Yeah, Bani has emotional. been killing us with the background. नहीं. You could be doing this. नहीं. इफ आई मुझे अगर ग्रीन स्क्रीन लगाना होता मैं बहुत कुछ कर चुका होता. बट नहीं, यही दिस इज माय हम्बल सेटअप. एंड क्या कर रहा हूँ यार लाइफ में. हाँ, माय मॉम्स नॉट एट होम, तो काफ़ी कुछ हो रहा है घर पे. एंड इफ़ यू आर ऑन इफ़ यू आर ऑन ट्विटर देन यू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है घर पे. I know. So yeah, that's happening. So yeah, काफ़ी फन टाइम्स. तो हाँ, आज सच में हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो चैट में अगर किसी के पास कुछ भी सजेशंस है तो बताओ. बट फॉर स्टार्टर्स आई गेस वील स्टार्ट विथ व्हाट दिशा हैज़ बीन अप टू in the states. There are states in many countries, so yeah, it मैंने गलती से बोल दिया, but ठीक है. ठीक है. हाँ, But we can like we'll also think of some like incentive so that people get the right city. हाँ. But what can be अब incentive अभी मुझे कुछ सूझ तो नहीं रहा. कोई नहीं, सोच लेंगे. हाँ. Our chat is very self-sufficient like that. They carry the stream. हम बस आके बैठ जाते हैं. या तुम डिसाइड कर लो आप लोग कि क्या इंसेंटिव चाहिए एंड क्या आपको चाहिए. इफ़ यू गेस इट करेक्टली, आई डोंट नो, लेट्स सी, समथिंग विल हैपन. सो yeah, but yeah, I am in the States, so this time I've been here before, so I think I have experience with jet lag, but is bar luckily because my sleep schedule is already so messed up, it just perfectly seamlessly blended in. So here I am the most, like I have the best routine ever because I'm up at 6 a.m. and I go to sleep at 10. But abhi slowly वो भी बिगड़ते जा रहा है. Nice. So hopefully by the time I'm back in India, this will make me a morning person there. So you've revealed that you're not in India. You revealed that I'm not in India. नहीं तो क्या हम इंडिया में भी स्टेट होता है ना, मतलब there are 20. You said okay. Come. Okay. Yeah, otherwise there's the nerdy answer
कि किसी को पूछा था कि तो कौन से स्टेट में रहता है, तो उसने कहा मैं सॉलिड स्टेट में रहता हूँ. सो या that's my time. And Check out the incentive Niveda has suggested. what yeah, that is not happening. You okay with that? नहीं 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 बिल्कुल नहीं. नहीं यार, Niveda is my friend from college and she is also in the same country as Disha, so वहाँ अभी चल Yeah. रहा है, दिन दिन Nice. का एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. So Oh yeah, should I like reveal what time it is? But that will be a very solid year. हाँ, नहीं नहीं फिर तो मतलब लोग निकाल लेंगे, जन्म कुंडली निकाल लेंगे, तो Mm-hmm. या Mm-hmm. ठीक है. Got it. But yeah, I came here. I'm basically visiting my brother, and I met him after 2 years. So that has been great. Nice. Yeah, and initially we were all nice and kind and emotional in the start, and then we just started bickering the way siblings do. You don't have a sibling, do you? नहीं नहीं नहीं. I've said this often on this channel as well and in life ki I think if I had a sibling I would have been an entirely different person, but yeah, here we are. Nicer. I don't know, yeah, probably. No, I don't know, elder siblings are more evil is what I've heard, but elder siblings also get like a co-parent credit, like they should get a co-parent credit, but yeah. Yeah, no, I have sympathies. Like, I am not an elder sibling, obviously, but all my friends are. So, looking at them, the way they have to manage the younger siblings, I feel bad for people. But yeah, so I caught up with him. That has been nice. And then I went to a concert, which was amazing. Nice. I saw Rex Orange County live. Nice. And even that was on my story, and so many people were trying to find out where is this happening. One person said, "ये वाशी में हो रहा है क्या?" Which place in Vashi looks like that? It's like I went to an app. वाशी इज लाइक क्या बोलते हैं, टाइम वॉर्प होता है ना, पोर्टल खुलता है कि यू थिंक कि हाँ ठीक है वाशी है ना, क्या होगा, बट देन लाइक द रोड्स आर नाइस एंड एवरीथिंग इज लाइक सो ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग. तो मतलब नवी मुंबई इज अ वाइब. तो अगर कोई देख रहा नवी मुंबई से तो बताओ कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे, बिकॉज इट्स फार. बट Yeah. Yeah, but watching them was a lot of fun because Rex Orange County is one of those like indie underrated artists, but is also popular. Indie hai, but still popular. You get it? So it was a very fun show, and I always love watching performances where the crowd actually knows the lyrics. So half the time the crowd is singing more than the artists. So that was really nice. फिर उसके बाद I did a few things. I've been eating a lot of interesting food. Whenever I go traveling, my number one priority is to try as much new food as I can. Correct. I tried some really good Mexican. What else? I tried a lot of fast food. So, we keep seeing videos of In-N-Out and Popeyes and I don't know, I'm trying to think of more places, but I've been trying a lot of fast food. Yeah, I've been eating really good food. And then all of the fun came to a stop because I came down with the flu, which is why I look so swollen and I sound like this. Yeah, and that reminds me I need to eat this pill, so I'll let you talk about it. ठीक है, चैट में सभी गेट वेल सून दिशा लिख दीजिए. And please pray for me. I honestly, this shit is crazy. One like equal to one prayer. So सभी जितना आप स्ट्रीम लाइक करेंगे उतना जल्दी दिशा ठीक होगी. तो बट हाँ, खाने के बारे में बताओ. व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट यू हैड सो फार? The best thing I had so far, I mean, the pancakes here are obviously amazing, but I'm trying to think of the best thing I had. Do you like pancakes as a breakfast idea though? Because I don't know. Sometimes, I mean, it's a really good, like, if you're hungover, pancakes. Yeah. It's too sweet. Like, it's too sweet as a breakfast. मतलब थोड़ा कुछ होना चाहिए ना, that like your day can't start so nice. So that's my point. Like that there should be some disappointment. Yeah.
Um, I mean, I'm okay with it. I'm honestly okay with it, but I can't have it every single day. Right. It's a very once in a, and that is what happened. I came here and I've been eating such good food, but all of it is junk. And like 5 days into it, I started feeling so much guilt. I'm not doing the right thing. I need to eat something that's fresh, that doesn't have preservatives in it. Yeah, I don't think Yeah, that's I'm trying to that's. look through my photos Huh. to see what is the best thing I've eaten, because there's this friend of mine and she demands that I send her a picture of every meal I eat when I'm Nice. traveling. So Nice. I keep it like, yeah. Hey, this is a nice Oh, I thing had to do. ramen. I Okay. had really good ramen. Nice. Yeah. You have to show the picture also now that you have mentioned. Oh yeah, sure. But yeah, this is a fun idea. Matlab, you have someone to share things with. I like, because it's not, I don't have to take aesthetic pictures or anything. It's just for her. वो फटाफट ले लेती हूँ. I don't know if you can Yeah. see it properly. Nice, nice. Aesthetic तो Yeah. है, like the food itself is the It's aesthetic. so, yeah. Yeah. And these this is the crispy rice sushi. Nice. Oh, yeah. So a lot of the things I ate this time are things that went viral on TikTok, and I would constantly see videos of it, and I would get such bad cravings, but India में मिलता नहीं था. So, you know, Do you have another. do you have a list or आप ऐसे ही ये कर रहे हो? No, I had a list. I knew that I needed to eat this crispy rice sushi. That was on my list, so that is done. I also wanted to eat birria tacos. Have you seen those videos of people dipping that in like a gravy of sorts? These Okay. tacos. Yeah, I wanted to eat that. I ate that. Wait, I'm trying to find a picture. And at this hole in the wall gas station type of place, it was so good. Nice. Yeah. Ah, nice. So I'm assuming the gravy would be spicier. Ooh, It was so spicy, yeah. It was amazing. And not this time, but every time I come here, I have very good Pakistani food. Like the food is amazing, like the biryani and everything. But इस बार नहीं खाया, अब तक नहीं खाया. But I'm sure Inshallah. I'll get it. Yeah. Inshallah. Nice. Nice. Yeah. Those are the updates from my end. नहीं, I think this is a good way to document a trip कि मतलब ठीक है ना, like आपने ताजमहल देखा, जो भी देखा, but the food is what matters the most. Yeah. That is so important. Yeah. Even when I went to Delhi, I took so many pictures of the food only to send to a friend. So it's a lot of fun to look back on those pictures. Yeah. खुद की शक्ल देख के क्या करेंगे? And like every meal is unique in some way. Like there would be something that you observed, or like the food was really good, or even if the food was terrible, then you have that memory as well. So it's a great experience. Your brain stays alive, I guess. I don't know. I have no idea what I'm saying, but yeah. Aman Kumar ने लिखा है chat में, when a physicist makes noodles, it's called CV ramen. Nice. Okay. सही है. So am I supposed to acknowledge if we get the correct answer? I have a feeling कि कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है, but I think let's see how far we can push this and it until it gets like very obvious. So yeah. Yeah. Cool. But do you usually have good luck while traveling? Because I think this has happened to me 2-3 times. I'll be traveling somewhere and I'll fall ill. Even when I went to Kolkata, I think I was having very severe back pain from doing something funky at the gym. So I had the time of my life, no doubt, but also like I was in a lot of pain. Yeah, नहीं, थोड़ा बैड लक वाला तो मेरे साथ भी चलता है. लाइक माई पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट मी ऑन ट्रिप्स अभी, बिकॉज एक तो पुलगा वाला जब से कांड हुआ है तब से तो थोड़ा यही हो गया. बट फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, आई डोंट थिंक वी हैव रिवील्ड दिस ऑन स्ट्रीम, बट ठीक है, चलो आज जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए. The Pulga accident? Yeah.
So I sprained my foot while trekking in Polka. तो काफ़ी feel आई वहाँ पे. And this was right when we reached. Like we reached there, we were going to the hotel place with our bags, and तभी ये हुआ. तो like the entire trip I was just lying flat. तो काफ़ी सीन हुआ. But the good side to that was that like I think 10 minutes after that happened, and like we reached the hotel and everything, it started snowing. And एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है उसका, वेयर आई एम सीइंग स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आई थिंक वैभव ने या किसी ने तो रिकॉर्ड किया था. एंड आई लुक सो, मतलब आई डोंट हैव पॉलिटिकली करेक्ट टर्म्स टू डिस्क्राइब व्हाट आई वाज लुकिंग लाइक, बट काफ़ी मतलब वो तारे ज़मीन पर का म्यूज़िक चला सकते हो उसके पीछे. इट वुड फिट अप्रोप्रिएटली. सो या Yeah. सो वही है. तो आई थिंक नाउ आई कैरी अ लॉट ऑफ मेडिसिन वाइल ट्रैवलिंग. तो वही है. बट आई थिंक डाइजेशन इश्यूज वगैरह तो होते ही रहते हैं. लाइक इट्स प्रिटी कॉमन. एंड आई डोंट नो व्हाई, Yeah, बट I mean, because everything is so dysregulated, you're very excited. So, yeah. and like people from India when they travel to the country that you are in, तो लोग यहाँ से मेडिसिन काफ़ी लेके जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ अ थिंग, बट अपेरेंटली आई थिंक मेडिसिन आर मोर एक्सपेंसिव देयर और सम शिट लाइक दैट. तो मतलब लोग ऐसे पुदीना रहा और डाइजीन लेके जा रहे हैं यहाँ से. और प्रॉब्ली Yeah. इट्स जस्ट अ बंगाली थिंग दैट आई हैव हर्ड. सो No, my mom is here with her, and it's coming so handy now that I've fallen ill. Yeah, and those are medicines are effective, and we know which ones work for us, right? And यहाँ के you won't be able to tell. एंड वहाँ तो मतलब वही है ना, जो भी हमने देखा है ऑन साइंटिफिकली एक्यूरेट शोज लाइक यूफोरिया, लाइक एवरीथिंग दैट यू गेट इन द ड्रग स्टोर कैन पोटेंशियली ट्रिप यू. सो वो भी है. Yeah. मतलब आपका पेट खराब हुआ, देन यू आर लाइक सडनली ओवरडोजिंग, तो वो भी हो सकता है. सो Yeah. Even I was trying to think of some like travel stories for you. I have quite a few, but I'm trying to think of what are some stream appropriate stories. But nice. yeah, Nice. but one of the things that always happens to me is that whenever I'm in some new place, and you just get a vibe of a place की ठीक है, safe लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं होगा. And then there are times when something's just slightly off. And मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि when I get like an off feeling, I'll have very bad dreams. And then the next day I'm like, we gotta go. यहाँ नहीं रह सकते. राइट. सो इज इट लाइक अ प्रेमोनिशन थिंग कि मतलब जैसे आप पहुँचते हो आपको सही The नहीं लगता? energy is a little. Yeah. I get Like, this. Like I remember, like as a family we were traveling very long back to Kerala, and there was this one hotel we had to stay in for one night, and like we had a stopover kind of thing, and it was a terrible hotel. मतलब मच्छर काट रहे थे सारी रात, बारिश हो रही थी, and not that बारिश हो रही थी was a hotel's fault, but बारिश हो रही थी. And there was some reason why we couldn't get like a big bed, so like I had to sleep on the floor and stuff, and it just like काफ़ी ऐसे haunted house वाली feeling आ रही थी वहाँ पे कि there's something off with this place, and everything that could go wrong in that trip went wrong after we stayed in that place. So yeah, I think vibe वाली चीज़ तो काफ़ी सही है. yeah. No, that's so true. But yeah. Also, like, how are you on planes? I'm going to tell you, ki, let's pick up this topic. Ki, what is your relationship with airplane rides? Are you scared of plane rides? ट्रेन या वगैरह, मैं ट्रेन में बहुत कम ट्रैवल किया, बट लाइक आई हैव मोस्टली ट्रैवल्ड इन फ्लाइट्स. तो अभी तो मतलब काफ़ी यूज्ड टू हो गया, एंड मोस्टली आई फॉल अस्लीप, और फ्लाइट्स आर दी ओनली टाइम व्हेन आई एम लाइक रीड सीरियसली. जैसे अभी आई वाज ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद इन अप्रैल में हम लोग गए थे, एंड द बुक ऑफ द मंथ वाज दिस वन एट एवलिन ह्यूगो, एंड अहमदाबाद टू मुंबई इज़ लाइक अ 45 minutes flight, right? तो 45 minutes going, 45 minutes coming back, I finished the entire book, and that's also because like the book is very fast and this thing, but book like on flights is when I'm seriously reading. So either I read or I completely fall asleep. I can't watch stuff though, like
जैसे पहले किंगफिशर में वो होता था ना कि आपका सीट के पीछे टीवी होता था, सो देन यू कैन सी थिंग्स प्रॉपरली, बट लाइक इफ आई एम on my phone and stuff I can't watch, so that's something that. So what's your deal with flights? Like, are you scared, are you okay with them? Oh no, I'm so comfortable. It's concerning how comfortable I get in airplanes. And I'm incredibly productive. Like on this flight here, I must have watched like 5 movies properly, full, pure dekhe. I must have read half a book and completed one whole assignment. I did not sleep at all. But yeah, that also meant that the minute I was trying to collect my baggage, I felt like I was going to pass out because I did not sleep for like 14 hours. But yeah, I'll tell you the movies that I watched on the plane. So मैंने before trilogy पूरी नहीं देखी है, ठीक है? I haven't seen the last part. I had seen the middle one, which is before sunset, right? Yeah. मैंने वो आधी देखी थी, and I watched the whole of it on the plane, and I did not remember this series like that. It left such a bitter taste in my mouth. Wait, you didn't like it? I didn't like it at all. I remembered it as a very pure love story, which is about what love is, this, that, and I was so disappointed to see. Yeah. एक second ना, vaibhav का call आ रहा है. हाँ, she's saying before sunset पसंद नहीं है. No. Yeah, that is what I was thinking. Should I've been meaning to like talk to him about this because I want to know if I ended up interpreting it in a different way, but I mean, the characters were very realistic, but I thought it was also very problematic. Like the way, I mean, both of them were first of all in relationships, okay, separate relationships, and they were clearly cheating on their partners. Whatever. So I saw that film and it was like 3 a.m. and I was looking around ki koi jagah hua hai, because I just needed to talk to someone so bad. Ki this is the thing we keep romanticizing all the time. Like, yeah. I watched that. I watched King Richard. I watched King Richard as well. Did you like King Richard? Yeah. I loved it. Yeah. I thought it was a lot of fun. I love motivational movies. Yeah. Anything that has to do with the story of a sportsman, I'm here for it. Yeah. King I really liked King Richard. मैंने कुछ ऐसे like scenes pause करके like proper screenshot लेके रखा था. Like there was this one bit where Will Smith gets beaten up in the beginning itself, and he comes home and his wife is like पट्टी वगैरह लगा रही है, and she holds up her fingers and asks him ki how many fingers am I holding up, and he says how come all 9 of your fingers are on your hand, and then she just laughs. It was such a nice moment कि मतलब we don't see that kind of couples, and like हमारे parents हमेशा ही ऐसा टाइप का मतलब हंसी पेरेंट्स वाला हंसी मजाक एक अपने आप में जॉनर होता है. तो I really liked the mom's character in the movie. She was very well written, and जो एक्ट्रेस थी मैं नाम बोल रहा हूँ उनका बहुत बढ़िया प्ले किया है. एंड मतलब यू सी द फर्स्ट 5 minutes एंड यू नो कि दिस मूवी वाज मेड टू गेट एन ऑस्कर, बट काफ़ी अच्छी लगी मुझे. बट या आई विश दे शोड सेरेनाज पार्ट्स एज बेट कि लाइक इतना कन्विंसिंग उन्होंने बना दिया था वर्ल्ड. So I wanted to see Serena's journey as well. कि ठीक है वीनस को तो बना दिया आपने अभी, what about her? And the movie just ends right over there. So, no, but I think that was a good thing, because I think a lot of people must have, including myself, a lot of people must have gone into the movie expecting the focus to be on Serena, but it wasn't. I was kind of happy about that. Achha. I mean, obviously very intrigued. If they make a movie about Serena's journey alone, I would watch it, but I wasn't completely mad about the fact कि उस पे नहीं था focus. No, I was mad only like while watching the movie itself कि इतना आपने engage करके बांध दिया था ना, then I wanted to like know more कि अच्छा ठीक है और बताओ क्या हुआ. तो वो feeling था, which is a great achievement for any fan. So there's that. So yeah, King Richard, great recommendation. Definitely watch. Yeah, it was and just like one of the major takeaways for me was how important it is to be delusional about like
whatever you about your dream, and that is all you need to focus on. Would He's you call great. it delusion, or would you call it like confidence? Like confidence bordering on overconfidence. I mean, it looks like delusion from the outside, but to the person, it's just confidence, right? Yeah. Yeah. Like जैसे दंगल में भी था एंड विप्लैश में भी था. सो आई एम एक थोड़ा ऐसे पर्सनल, आई नो समवन who did something similar in real life, and that Yeah. person is basically a musician, and Mhm. he was like, he wanted to become like the most popular musician in his field, but in India, but that didn't happen. And he was like also learning from a very reputed person. So then that person early on decided कि बहुत politics है, बहुत ये है, so I'm never going to become as popular. तो उन्होंने क्या किया, he focused his entire life's energy on training his kid, and some of the things that he did to train his kid with the instrument that he plays are like very uh, I don't know, मतलब वो होता है ना कि there's a line between obsession and like bad parenting, and Got from it. an outer world it looks like bad parenting. जैसे किंग रिचर्ड में भी वो नेबर होती है ना जो पुलिस को बुला लेती है कि ये मतलब Yeah. एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन दैट is this obsession, is this like passion, or is this child exploitation or whatever. But the person जो उनका बेटा था is very successful as Yeah. a musician in the same field, and now how do you judge something like this? So with these kind of stories are very fascinating to me because I know this person very closely. So yeah, काफ़ी अच्छी लगी. So yeah, No, but like as per according to you, what do you think? Because you know them very closely. I don't know because like obviously there is some regret in Is that that something you person. would want for yourself? I kind of underwent like a fraction of that pressure because when that person was teaching his son, he was also teaching a lot of other people through his life, and then I was basically learning the same music from that person. तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर मुझ पे भी आया, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई इवेंचुअली एंडेड अप लूजिंग टच with the thing, because I never felt motivated to practice, because वही होता है ना कि अगर आप किसी की सिर्फ गलतियाँ ही पॉइंट आउट करो तो फिर उसका वही हो जाता है ना कि आप मैं कुछ भी कर लूँ, आप सिर्फ फ्लॉज ही निकालोगे मेरे, तो वाई शुड आई इवन बॉदर. तो वो हो जाता है. Yeah. बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कोई भी डिसिप्लिन हो गया, स्पोर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, देयर इज अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस दैट यू नीड, एंड यू नीड लाइक अ वेरी डिसिप्लिन रूटीन. जैसे बोलते हैं ना कि आपको बचपन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट हैपन. लाइक दैट्स ट्रू फॉर स्पोर्ट्स, दैट्स ट्रू फॉर म्यूजिक, एंड इट्स ट्रू फॉर एनी डिसिप्लिन आर्ट फॉर्म. तो I really don't know. Matlab, I know that it can yield results and it has yielded results for a lot of people, but I think you have to be in the right hands for that. So yeah, I haven't made up my mind. But I don't know if I'll be able to do that to my kid. Or let's see. If I'm frustrated enough, then sure, why not? Yeah. Sometimes when I watch these movies, I keep thinking like, maybe if my parents were as involved and put so much pressure on me, Yeah. I would have liked it. But yeah, Yeah. I think you only know when you're in that situation, and Yeah. people react to pressure differently. Yeah. Like I've also seen the flip side of it ki I have had to work with a lot of child actors, and this is something that I'm very fascinated about, like the world of child actors and everything. कि it's primarily because एक ही रीज़न होता है कि पेरेंट्स को एक्टर बनना था, बट दे couldn't do it, so now they are fulfilling their this thing through the child. And the way these parents behave, like when they come for auditions and how they prepare their children to kind of deliver their lines and everything, एक बहुत set routine बन जाता है. Like I don't know how to ठीक है, ये मैं स्टोरी सेंसर कर देता हूँ, बट द पॉइंट इज़ दैट देयर वाज अ किड आई वाज ऑडिशनिंग, एंड मतलब द पेरेंट आई लाइक, आप कहते हो कि पेरेंट को बाहर जाने के लिए, सो दैट लाइक आई कैन इंटरेक्ट विद द किड डायरेक्टली फॉर द ऑडिशन.
but the parent was like very adamant that they want to stay for the audition, and the child was shit scared. I wanted to make them comfortable कि it's Yeah. fine, it's okay. तो वो parent मान ही नहीं रहा था. फिर मैंने like by force I said कि sir आप अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं लूँगा audition, आप decide कर लो. Then that person went outside. तो फिर मतलब ये लिया, एंड दैट चाइल्ड वॉज सो स्कैर्ड दैट उसका बेसिकली ये था कि जब भी वो परफॉर्म करती थी तो द पेरेंट वॉज ऑलवेज इन दी आई लाइन, एंड वो मतलब ऐसे घूर रहे होते थे कि अगर नहीं करोगे ना तो देख लो. लाइक ऑब्वियसली उस किसी के सामने मारते वारते थे या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट द चाइल्ड वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ द पेरेंट्स. सो देयर इज ऑब्वियसली दीज एक्सट्रीम्स एज वेल. तो वही है, आप मतलब आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो या एक प्रॉपर जैसे किंग रिचर्ड में उसका होता है कि प्लान बना के आप ये कर रहे हो. लाइक आई एम श्योर Yeah. उनकी लाइफ में भी देयर वुड हैव बीन मोमेंट्स वेयर दे थॉट कि ये तो मतलब बुट्टा सटिया गया है, इसको कुछ पता है नहीं, एंड मे बी लाइक वी आर बॉर्न इन द रॉन्ग फैमिली टाइप्स. आई एम श्योर Yeah. देयर वुड हैव बीन मोमेंट्स, वो दिखाया नहीं है फिल्म में. बट वही है, लाइक देयर इज नो Yeah. राइट आंसर टू दिस. For sure. I mean, and at the end, it comes down to whether they become successful or not. Because if they don't, then they'll just turn around and say, "Ki this person ruined my life." But if they do, it's all okay. Like, yeah, the pressure made sense. Because ultimately, even in King Richard, he was trying to fulfill his own dreams through them, Right. and that's what all these kids. Yeah, like this is such a uncomfortable topic to just not only discuss but like think about. You've seen what is that show on TLC? Dancing Moms or something. No, like that beauty pageants for kids. हाँ समझ गया. And like Yeah, just toddlers and tiaras. oh wow. Yeah, so उसमें था ना Little Miss Sunshine. That'll make you lose all faith in humanity. The reality shows with children are like the worst. I strongly feel if there is any person in authority who is watching this stream, so please like the stream, and who is watching this stream and has the authority to stop kids reality shows, please stop them, because Yeah. nothing good is coming out of that. Like I'm sure talented बच्चे discover हो रहे हैं वगैरह, but दे दो बचपन, दे दो यार. बचपन important होता है, बचपन सबसे important होता है लाइफ में. बहुत तो ज़्यादा, yeah. yeah, so yeah. There's a super chat that I think I should address. हाँ. It's from Kshitij Sinha. He's saying ki before trilogy is the best. I watched the first and second movie in 10th grade and it really shaped me romantically. I've watched it over and over since, and Before Midnight was so raw. It's phenomenal. Have you watched all three movies? I haven't seen the last one. मैंने भी Midnight नहीं देखा. Okay, so you know just as much as I do. So I don't remember the first part very well, but I watched that when I was in school as well. I was very young. I had very different notions on love and romance in general. So I loved that movie, and that I think is a very unproblematic movie in general. Loved that movie. But the second part, I think I'm going to hold on to this opinion until someone can change my mind. I think it's very problematic. हाँ, Like- it also depends on what phase of life you are in, right? कि मतलब अगर आपने Yeah. कुछ वैसा एक्सपीरियंस किया तो you won't relate to it. Okay, are you throwing shade? नहीं, मैं तो Yeah, maybe that, but okay. I think this would be a fun stream to do. I'll probably do a stream with them where we can like battle it out. अच्छा. Because yeah, like usually I second guess my opinions about a lot of things, but I was genuinely so perplexed by this movie and why people like it, that I remember the first thing I did after getting off a plane is obviously pass out, and then I called my best friend. I was like, dude, have you seen the second part? Like this yada, like I went off. Nice. But yeah. अभी मुझे याद भी नहीं है कि बिफोर सनसेट में, क्योंकि मैंने बहुत मतलब जब टॉरेंट वाला टाइम था कि सब डाउनलोड करके हार्ड डिस्क में रखना पड़ता था, उस टाइम पे मैंने देखी थी. सो आई डोंट रिमेंबर मच ऑफ द फिल्म. प्रॉब्ली आई हैव टू सी इट अगेन टू. यश गुप्ता is saying vaibhav real account से आओ. नाइस. ओके, चलते चलते की बात क्यों हो रही है? ओके, चलते चलते इज़ अ ग्रेट मूवी विद ग्रेट म्यूजिक, सो या एनी डे. Is it based on this?
नहीं मतलब not based on this, like some elements were taken, but like yeah I think नहीं, हाँ नहीं उसके बाद आई थी, हाँ करेक्ट, बट या चलते चलते है शाहरुख खान, which makes it even better anyway, so that's that. Cool. Yeah. सौरभ राय कह रहे हैं अजीज मिर्जा इज बेटर देन लिंकलेटर, यस 100% आई एग्री, एंड इस पे आप मेरा साइन ले सकते हैं. एंड What movies has he made? I'm sorry. Aziz Mirza has made चलते चलते, he has made किस्मत कनेक्शन, he has made Yes I've watched Boss, that. he has made फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, he has made राजू बन गया जेंटलमैन, which is a great movie that I like, and he made Yes Boss. So the So yeah, basically he's super popular. Just yeah. the best of Shahrukh Khan undoubtedly. चलते चलते की क्या स्टोरी है, मैंने देखी है बट याद नहीं आ रही है. Like I हाँ remember Rani चलते Mukhर्जी in Hurt and हाँ, so they meet, they fall in love, they get married, then they discover oh shit marriage is problem, then they get separated, then sad songs happen, then they get together. So yeah, that's the story. Yeah, yeah. There's a relative of mine जो मुझे एरिया बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हूँ जो मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में एक एरिया में रहते हैं, एंड दी ओनली रीज़न आई लाइक्ड गोइंग टू देयर हाउस वाज क्योंकि उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में चलते चलते शूट हुई थी. तो लाइक देयर आर लाइक यू कैन सी ये यहाँ पे ये सीन हुआ था, यहाँ पे ये सीन हुआ था, सो या फन. तो या ग्रेट. next. Yeah, cool. Next movie. What other movies did I watch? I watched 2 more movies. I also watched The Lost Daughter. What's I'm it gonna about? say that for The Lost Daughter. कैसे बताऊँ? हाँ It's about. Okay, I'm very bad at like descriptions. इसलिए every हाँ time we are going to talk about movies on the you stream already. I just explained चलते चलते to you in the worst Yeah, possible because you way. are great at it. नहीं तो खराब डिस्क्रिप्शन था ना, मैं वही कह रहा हूँ, there is the bar is very low. You do a good job. You Yeah. do a pretty good job. Forget it. But I watched The Lost Daughter and I'm very excited. I'm gonna काफी time हो गया कि मैंने solo stream नहीं की है because my last stream was not good. क्यों क्या But हुआ? dude, पहली बार तो 3 बार my internet crashed. Okay, 3 times. And एक बार क्या हुआ कि the video was apparently stuck and they could only hear my voice. And अच्छा then once my mom entered the room and she didn't know I was streaming. So she was like, Disha, do you want to go eat dinner? Like she was talking to me in Marathi, obviously, and everyone heard, and I was like, oh God. फिर उसके बाद तो like I became too nervous. It went downhill from that. हाँ ठीक है, लाइक होता है. आई मतलब ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक व्हेन आई माय फर्स्ट स्ट्रीम तो माय OBS क्रैश्ड एंड मेरी वॉइस लूप हो गई थी 2 मिनट के लिए, तो सबको एको सुनाई दे रहा था. तो अ टोटल ऑफ 3 पीपल वॉच दैट स्ट्रीम व्हेन थिंग्स हैपन प्रॉपरली. बहुत ऑकवर्ड स्ट्रीम थी वो. एंड उसके बाद एक स्ट्रीम हुई थी वेयर आई वॉज लाफिंग टू मच फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, एंड माई मॉम येल्ड फ्रॉम द अदर रूम की मतलब वाई आर यू लाफिंग, लाइक शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद द वे आई लाफ, एंड शी येल्ड. तो आई डोंट थिंक एनी वन इज़ गोइंग टू नो कौन सी स्ट्रीम है क्योंकि वो हमने एडिट किया था बाद में, बट या ठीक है, इट्स ओके. या मेरी भी प्राइवेट हो गई सब. नहीं सही है यार. आई थिंक दिस इज व्हाट मेक स्ट्रीम्स ह्यूमन, आई गेस. पता नहीं, हम सब कुछ रोमांटिसाइज कर लेते हैं. People were watching in the start, and then the way I watched it, like when I was panicking and stuff, और ऐसे गिरते like 60 people. I'm like, no. I don't think I even said bye properly. I was like, end it. Yeah. नहीं नंबर गेम तो बहुत डेंजरस होता है. अभी वैभव के साथ मेरी इसी पे बात हुई थी दैट वंस यू गेट एडिक्टेड टू सीइंग द नंबर्स व्हाइल यू आर स्ट्रीमिंग, तो आप हर चीज़ जो कह रहे हो उसको सेकंड गेस करने लगते हो. जैसे क्विज सीजन 2 में like we had a lot of issues getting guests and stuff. मतलब ये सब I don't know if I should say this publicly or not, but हाँ ठीक है, चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, like even personal life, work life,
जो यूजुअल बहुत कुछ था. एंड उस टाइम पे इफ़ अगर 100 टच होता था तो मतलब ऐसे लगता था कि हाँ चलो आज अच्छा गया. बट अदर डेज इट वुड बी लाइक 50-60 विद द बेस्ट पॉसिबल गेस्ट, मतलब विथ वॉट एवर वी कुड गेट. एंड आई वुड सेकेंड गेस एवरी सिंगल नाइट की शिट आज क्या ख़राब हुआ, आज ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था. And despite the fact that I still feel Quiz Season 2, the movie Quiz Season 2, has some of the best questions I have ever made in my entire life. Not just me, like my entire team has made. And content wise, तो मतलब कोई मतलब I still attest to this 100% बहुत सही था. But there's always that some extra thing that is not in your control and वो फिर बाहर चली जाता है. तो वो पता नहीं. आई स्टिल थिंक अबाउट दैट. तो मतलब वैभव के साथ भी मेरी एक बार बात हुई थी इस पे कि यार ये मतलब वॉज इट माई फॉल्ट, वॉज इट नॉट माई फॉल्ट. तो हाँ, Yeah. 4 घंटे चला था वो कॉल. एंड Oh. या इट वॉज वन ऑफ दोज डेज. तो या Yeah. No, but like that's you told this to me even the last time that don't get too comfortable. Like streets have this habit of humbling you when you get too comfortable. And that day I got too comfortable because I had wrapped up my solo this guest episode with Agarwal, Yeah. and that went really well. So मैंने बोला अब वो मैंने कर लिया है तो what's the big issue with this? And then the stream was like hold up. नहीं, जैसे वन ऑफ द प्रीवियस प्लेसेस आई यूज्ड टू वर्क एट, तो वहाँ पे एक बंदा था जो लाइक अपन साथ में बैठते थे. सो ही हैड अ रूल कि सुबह के पहले 1 घंटे में कोई हंसेगा नहीं. everyone is going to be like you'll be normal, you'll be like joking and everything. But उसका ये मानना था कि अगर आप सुबह बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, आपका पूरा दिन ख़राब जाएगा इसके बाद. कि if you are like laughing too much, then like life ensures that you get effed. And it I was mean, I believed it in that too, but that Yeah. is and crazy. it's 100% true. I believe in this wholeheartedly. तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं खुश ना रहूँ सुबह. सो यार नहीं यार, क्योंकि होता है यार. जिंक्स इज समथिंग दैट आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली. तो या I'm not stitious. I'm not superstitious, but I'm a You little say this stitious. Yeah. on every single stream. Everyone knows how superstitious you are, Hindol, by Yeah. now. Yeah. But Great. don't you think that maybe if the morning starts right and you're happy in the morning, you'll carry the same energy for the rest of the day? See, it's not that I haven't tried it. I try it a lot. Like mostly I try to be happy, but then my हाँ. happiness gets ruined through the day. तो या मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ कि दुखी होना है, एकदम सैड म्यूजिक सुनना है. बिकॉज म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई of the first 1 hour of my day every day. Yeah. Like if I'm traveling to work, I have to like वहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि मतलब ओके टुडे आई विल डिस्कवर न्यू सॉन्ग. नहीं, आई नो कि आज मंडे है, आज मुझे ये गाना सुनना है, दिस इज इन व्हाट आई एम इन द मूड ऑफ, तो मैं वही सुनूंगा. बिकॉज माई इंटायर वाइब ऑफ फॉर दैट डे डिपेंड्स ऑन दैट वन सॉन्ग. तो वो तो मतलब इट्स सैक्रोसेंट. बट वही यार, पता नहीं, कभी कभी आप बहुत खुश होते हो तो लाइफ आप पे हक के चली जाती है. सो या That is true. That is true. ठीक है. We will now come back to movies. So you saw King Richard, you saw Before Sunset, and you saw The Lost Daughter. The Lost Daughter, and I saw one more movie, but Miko, yeah, I watched this very old movie. I don't know why I was in the mood for it. Rajnigandha. Have you seen or heard of it? बासु चैटर्जी वाली रजनीगंधा. Director का नाम नहीं याद. हाँ. The lead is like the heroine is very pretty. Yeah, Sinha. Yeah, Yes. yeah. Yeah, that is why I watched the movie because I was like, oh, she's so pretty. I need to Nice. watch. Even वो movie देख के फिर मेरा खून खौल गया. Yeah. Like, but you're right. Maybe I'm in that phase. No, there's a great movie by the same director called Choti Si Baat. And Oh yeah. it's उसमें भी अमोल पालेकर थे. अमोल पालेकर एंड विद्या सेना. काफ़ी मुझे तो अच्छी लगी मूवी. एंड द स्पेशलिटी अबाउट दिस डायरेक्टर इज़ दैट ही यूज्ड टू शूट लाइक मोस्ट ऑफ हिज मूवीज इन बॉम्बे बैक देन. उस टाइम पे मुंबई नहीं था, बॉम्बे ही था. तो एंड यू सी अ लॉट ऑफ ओल्ड बॉम्बे इन हिज मूवीज विच इज़ लाइक एन इंटरेस्टिंग टाइम कैप्सूल काइंड ऑफ अ थिंग. Yeah. तो वो है. जैसे उन्होंने वो वाला गाना भी शूट किया था, रिमझिम गिरे सावन, अगर आपने उसका म्यूजिक वीडियो देखा. सो इट्स लाइक अमिताभ एंड
I'm forgetting the name of the heroine. They are walking in town in rains and एक वो गाना है vibe. जब तक बॉम्बे है, जब तक बॉम्बे में बारिश है, तब तक वो गाना vibe रहेगा. Like that's the power of True, that true, song. true. So Yeah, yeah. yeah. No, इस मूवी के भी गाने बहुत प्यारे हैं. Mm-hmm. Yeah. पुरानी But मूवीज में चलो, दिस इज़ नॉट अ बूमर रैंट सेशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि पुरानी अभी की मूवीज़ में भी गाने अच्छे होते हैं. आई डोंट नो किसी मूवी. हाँ, इसका एल्बम काफ़ी सही लग रहा है मुझे. लाल सिंह चड्ढा, आई बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. देयर आर ओनली 2 songs yet, बट काफ़ी अच्छे गाने थे. I haven't heard the music या yet, या but I will check it out. या The song I have been listening to on a loop is "Am This" by Peter Catco. पता नहीं कौन सी एल्बम, पुराना गाना है काफी, बट अचानक से it popped up in my recommendations और मैंने सुना, and अभी मैं वही सुनने वाली हूँ नाइस non-stop until I hate it. नाइस Yeah, या. it's a very very beautiful song. नहीं, पीटर कैट एंड लिफाफा का वही है कि एक गाना अगर आपके लाइफ में सडनली आ जाता है देन इट टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू गेट इट आउट. जैसे Yeah, it'll completely consume you. या देयर इज दिस वन सॉन्ग कॉल्ड निकम्मा जो ऐसे मेरे प्लेलिस्ट में आ जाता है कभी कभी एंड देन आई Yeah. एम लिसनिंग टू इट एवरी सिंगल डे एंड देन सम अदर सॉन्ग हैज़ टू पुश इट आउट. सो या काफ़ी एडिक्टिव. सो डू कैन वी टेल पीपल नाउ? नहीं, ठीक है, अभी अभी नहीं, कुछ नहीं. आई डेंट से एनीथिंग. But या yeah, सेगवे. जो समझदार है वो समझ जाएंगे. हाँ हाँ या. Yeah, आई I don't know where to place dips for that, but I am. हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू, बट या Why not? या. Okay, off stream. हाँ, नहीं, अच्छा है. बट या आई वॉच्ड दिस वन डॉक्टर स्ट्रेंज द न्यू पार्ट. एंड मतलब हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम मोस्टली बुराई नहीं करते किसी चीज़ की. मतलब किसी चीज़ में अगर कुछ अच्छा है तो वो अप्रिशिएट करते हैं. बट दिस फिल्म पिस्ड मी ऑफ लाइक वेरी पर्सनली कि लाइक आई एम अ फैन ऑफ नॉस्टैल्जिया व्हेन डन राइट. मतलब जैसे एंड गेम Yeah. था, इन्फिनिटी वॉर था, देयर वाज कॉन्टेक्स्ट टू इट बिकॉज यू हैव बिल्ट लाइक अ यूनिवर्स फॉर 10 years एंड नाउ एवरीथिंग इज पेइंग ऑफ. जैसे आई होप अभी एंड गेम तो देखी होगी सभी ने, तो एंड Yeah. गेम की अगर मैं स्पॉयलर्स दे सकता हूँ तो मैं दूंगा. तो Yeah. जब कैप्टन अमेरिका वो उठाते हैं थॉर का Yeah. हैमर, इट्स वो सीटी मार मोमेंट है क्योंकि आपने 10 साल से उसको बिल्डअप किया, राइट? तो Yeah. दैट इज़ नॉस्टैल्जिया डन करेक्टली. अब प्रॉब्लम ये हो गई है मार्वल की मेरी अंडरस्टैंडिंग में, दैट वंस यू हैव गिवन एंड गेम टू पीपल, पीपल आर एक्सपेक्टिंग एंड गेम to be every movie, right? कि जैसे No Way Home में they were able to manage and deliver on that nostalgia, but उसमें भी it was quite contrived. मतलब the first half of the movie existed only to get all the boards in place so that this could happen, whatever happens in that film. इसमें the nostalgia was so badly done कि मतलब there were so many references which were just like I मतलब पर्सनली मुझे बहुत गुस्सा आया था. एंड देयर वर Yeah. 2 characters whom I was very disappointed to see what happened to them on screen. One of them is a very beloved character from a sitcom that I like, and the other person has been in the Marvel universe per Why se. you can't name the नहीं, characters? That's all. हाँ, मैं अभी आई थिंक क्योंकि है ना अभी थिएटर में चल रही है तो आई डोंट थिंक आई शुड गिव स्पॉयलर्स. बट Sorry. वो कैरेक्टर्स ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं एंड इट वाज वेरी पिसिंग ऑफ. सो या, आई डोंट नो मैन. एंड इट ऑल्सो फेल्ट अ वेरी रश्ड फॉर सम रीज़न, दैट इट फेल्ट लाइक बहुत कुछ था बट दे जस्ट कट इट आउट. So I don't know, man. Because Doctor Strange 1 was a movie that I really liked. Like I remember every single bit of watching that movie, and it was great in 3D. मतलब usually Marvel movies में आप उतना expect नहीं करते, right? कि ओके ठीक है, एक फाइट होगा, न्यूयॉर्क के लग जाएंगे एंड देन थिंग्स विल बी ओके. बट डॉक्टर स्ट्रेंज में बहुत कुछ उन्होंने किया था VFX वाइज. सो दैट is something, and I also remember it because that was the day demonetization happened. Like मैं theater से देख के निकला और demonetization हुआ. And so yeah, but yeah, Doctor Strange 1 was great. I don't know, man. Chat में बताओ if you guys liked it or
Even Right. I liked, I mean, I haven't watched all the Marvel films, but मैंने Doctor Strange 1 देखी है, and Hmm. मुझे बहुत पसंद आई थी. Yeah. But I have been hearing very good things from other people about this, the new one that came out. So Yeah. I'm surprised to hear कि आपने इतनी enjoy नहीं की. नहीं, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की है वो मार्वल फैंस नहीं है, वो देख लेते हैं, मतलब हाँ ठीक है मार्वल फिल्म आई है तो एक्सपेक्टेशन एज सच नहीं होती, मतलब आई एम गोइंग देयर टू बी एंटरटेन्ड. तो अगर आप मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो अब मैं क्या ही बोलूँ. बट या आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा. एंड मार्वल नहीं नहीं, हाँ people are agreeing with you in the chat. है. अच्छा क्या? अच्छा Yeah. चलो इंटरेस्टिंग. Yeah. या सो या एंड या और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में. Mm, yeah, yesterday I started, okay, not yesterday. So I'd gone over to a friend's house to stay for a bit, and she's a huge Hassan Minaj fan. So उसने मुझे बैठ के पूरा stand up दिखाया. Nice. So I watched a lot of, like, I don't what's his Netflix special Homecoming called? King. Homecoming King. Homecoming King मैंने देखी पूरी, हाँ, and Patriot Act Patriot और Act. कुछ, yeah. I watched that. Really enjoyed it. Yeah. I was very surprised. I don't know for so long मैंने क्यों नहीं देखा था, but I kept my distance from it, but really enjoyed that. I also started watching The Lost Room. But I couldn't sit through the first episode only. मजा नहीं आई. It was something that Sahil Shah had recommended when we did a guest episode with him. But it's like a 2006 TV show. So पुराने shows कभी-कभी, like, sometimes you enjoy them, but sometimes like the old tech frustrates you. So that is what happened. So I barely watched like 20 minutes. Old tech as in, like, did it seem slow or something? Yeah, the world Like, didn't work for like you. you know, बहुत जगह पे green screen use किया, and वो अच्छा, देख वैसे. के मुझे लग रहा था नहीं यार क्यों, I mean, Yeah. understandable, but अब मजा नहीं आ रहा था देखने. So but yesterday another show he had recommended was Man Seeking Woman, and it's on Hulu, and my brother has a Hulu subscription, so I've been watching that, and that is so interesting, but I have to hold back क्योंकि I have assignments to do, but उसके बारे में next stream में पक्का I'm pretty sure I'm gonna enjoy that show. शोज में मैम लाइक अभी मैंने पूरा देखा नहीं है. आई हैव सीन इट इन बिट्स एंड पीसेस, बट जितना मैंने देखा मुझे काफ़ी सही लग रहा है. सो इट्स दिस शो कॉल्ड द मैकेनिज्म एंड इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज इट इज़ इन, बट काफ़ी सही शो है. तो उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि देर इज़ लाइक अ कॉप इन्वेस्टिगेटर पर्सन एंड एक कोई है मनी लॉन्ड्रर, एंड उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है. इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहा है? वो जाता है, वो मनी लॉन्ड्रर के ऑफिस से जो भी उनका कचरा होता है वो अपने घर पे लेके आता है, एंड जो भी पेपर श्रेडिंग्स होती है, राइट, लाइक यू पुट इट इन द श्रेडर एंड वो सारे अलग अलग पीसेस निकलते हैं. तो वो क्या करता है, वो सारा कचरा निकालता है, उसमें से जो भी पेपर श्रेड वाले बिट्स होते हैं ही प्लेसेस देम टुगेदर एंड ही रिकवर्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वाज देयर, जो भी उनकी बैलेंस शीट वगैरह थी. एंड ये सब करने के बाद वो फिर बैलेंस शीट में चेक करता है कि ओके यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, दिस इज़ हाउ फंड्स वर ट्रांसफर्ड. एंड बहुत इंटरेस्टिंग शो है. एंड व्हाट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग इज़ दैट ही हैज़ लाइक अ 6-year-old डॉटर, एंड सम ऑफ द सीन्स ही हैज़ विथ द डॉटर आर रियली गुड. मतलब इट्स दैट रीज़न वाई यू लव दिस कैरेक्टर सो मच कि ये तो मतलब कॉप है, इन्वेस्टिगेटर है, अंडरडॉग है, सब कुछ है, बट ही इज़ अ ग्रेट डैड एज वेल. तो मतलब काफ़ी 9/10 10/10 वाला शो है ये. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड द मैकेनिज्म ऑन नेटफ्लिक्स. तो या Okay, yeah, I'll check that out. Are you going to watch Modern Love Mumbai? मॉडर्न लव, हाँ मैं अभी सारे नहीं देखे हैं. अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम कॉलेज इज़ इन वन ऑफ द सेगमेंट्स, तो मैंने वो वाला सेगमेंट पूरा देखा था. तो मुझे तो अच्छा लगा. लाइक आई लाइक द होल concept and everything. I didn't know that even the Mumbai edition is adapted from like New Yorker stories. जैसे ओरिजिनल मॉडर्न लव का भी वही कॉन्सेप्ट था ना कि न्यूयॉर्कर में कॉलम था एंड देन दे अडेप्टेड इट फ्रॉम दैट. तो मुंबई वाले में भी उन्होंने वही किया. लाइक दे हैव टेकन दोज
stories and kind of adapted it in Mumbai is what I've heard. तो Yeah. interesting approach है, देखते हैं. Mhm. Yeah, I have a feeling I'm not going to enjoy it. Why? So, पता नहीं मुझे मैंने ट्रेलर देखा और मुझे ट्रेलर देख के लगा कि मे बी आई वोंट एंजॉय इट. मुझे फर्स्ट सीजन पसंद आया था. And I haven't seen the second one, but yeah, but like what does the chat think? Because a lot of people are talking about it. If you watched it, did you like it? Please let us know. नहीं, I know that Modern Love में there's an episode called I Love Thane and I think Dhruv Sehgal has directed it and तो वो मुझे देखना because I like little things a lot and मतलब मैं ठीक है चलो reviews होंगे like people would like things dislike things about stuff. There's a friend of mine मतलब a junior from college, उसने ऐसे 4-5 स्टोरीज भर के रैंट लिखा था ऑन वाई दिस इज़ नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर थाने एंड आपने सिर्फ 4 लोकेशन दिखा दी तो ये थाने थोड़ी बन यार मतलब सांस तो लेने दो यार मतलब ठीक है इट्स ओके सब नहीं दिखा सकते यू हैव लिव्ड देयर See, फॉर you know, 6 if the Thane cut is triggered, it's okay because Thane cuts really like are the butt of every joke ever. नहीं ठीक है आई गेट दैट कम्प्लीटली बट इट्स लाइक इट्स अ हाफ एन आवर 1 आवर लॉन्ग आई डोंट नो कितना उसका लेंथ है सेगमेंट. आपकी ज़िंदगी 20 साल से चल रही है, 20 साल का कंटेंट नहीं डाल सकता मैं इसमें. I know. At least तुम्हें acknowledge किया. Tell me हाँ why would they pick Thane out of all places, but किया. एंड मतलब सोचो ना मतलब आई लव मुंबई इसमें पूरा ये हो सकता था ना कि एक वर्सोवा में निकाल दिया, एक बैंड्रा में निकाल दिया, एक साउथ बॉम्बे में निकाल दिया, हो गया ना. थाने रखा है मतलब वो भी अपने I आप में know. बड़ी बात है. तो I wonder if this is my friend from Thane. We are always bullying her about the fact that she's from Thane. But anyway. Have you seen that meme going around? which First one? of all, my parents live in Thane. I live in the moment. Yeah. And Is it? no, No. it's from the movie Anand. I think मैंने तो वो वाला वर्जन देखा था जिसमें राजेश खन्ना होता है और उसमें वो I live in the moment लिखा था. But अच्छा हाँ वो उसको वो पूछती है कि आप दिल्ली से हो क्या या something like that. हाँ सही है. yeah, आनंद. so Yeah. fun. और क्या हो Yeah. रहा है लाइफ में? और तो कुछ हो नहीं रहा. बट यहाँ चैट में सब लोग बताओ आप लोग क्या देख रहे हो एंड इज देयर समथिंग Yeah. दैट यू वुड वांट अस टू वॉच. सो हम फिर अगली स्ट्रीम में होमवर्क करके आएंगे, कोशिश करेंगे कि हम होमवर्क करके आएँ. या मेकिंग प्रोमिसेस I ऑन द think इंटर. people will stop watching us if we come prepared. हाँ वो भी है. नहीं बट आई एम ग्लैड दैट टचवुड वुड का टचवुड OBS वर्कड आउट सो फार. अभी तक कोई ग्लिचेस नहीं रही हैं एंड द रीज़न वाई आई हैव बिन struggling or like aching to get onto OBS is one, I can change the beginning music जो आज हमने किया है एंड आई डोंट नो क्योंकि जो ओरिजिनल वाला म्यूज़िक है ये मैंने वैभव को भी बोला है उससे बहुत एंग्जाइटी होती है मुझे क्योंकि क्विज के पहले जब लाइक आई नीडेड लाइक 10 seconds टू वैसे काम डाउन तो उस टाइम पे वो बज रहा होता था तो मेरे दिमाग में वो वैसे वो एक होता है ना टेनिस बॉल है जो इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर जा रही है तो मेरे दिमाग में वो चल रहा होता था. सो काफ़ी no. एंग्जाइटी होती है मुझे उससे. दैट इज़ वन. एंड सेकंड इज़ अगर इसमें कॉपीराइट वगैरह का सिस्टम नहीं होता तो देर इज़ अ लॉट वी कुड डू विथ म्यूज़िक. लाइक दिशा हैज़ अ ग्रेट म्यूज़िक टेस्ट एज वेल तो हम हर स्ट्रीम में कुछ नया लगा सकते. बट अभी के लिए तो वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक. तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो हम अच्छा लेके आएंगे आपके लिए. तो वो है. And secondly, we've been thinking of playing games on stream. Not like ऐसा hardcore PUBG वगैरह नहीं खेलेंगे मतलब simple board games. Metal games with you guys. हाँ वो तो चल this entire universe is a mind game तो वो तो है. Yeah. बट नहीं जैसे बोर्ड गेम्स वगैरह कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग तो देखते हैं. आई होप बाय द नेक्स्ट स्ट्रीम आई एम एबल टू गेट माई हैंड्स dirty with that. So yeah, I'm kind of looking forward to doing all of this. So Yeah. Do you think I should reveal where I am now? I don't think people care anymore.
I अरे यार वो चले गए जो स्टार्टिंग में गेस कर रहे हाँ, थे. स्टार्टिंग वाले वो चले गए. But I have to say, I think it was Anshul Verma who guessed it correctly. Yeah. I'm in Atlanta. Yeah. Yeah, and I also want to give a shout out to Niveda, who is my friend who lives in the US. उसने काफ़ी detailed तरीके से आपका location ये कर दिया था, because she listed out all the places Rex Orange County was performing in the last 2 weeks, and फिर लोगों ने Oh, दो चार कर yeah. लिया. तो yeah, shout out. Yeah. So yeah. But yeah, this is fun. It's what's the time there now? अभी यहाँ 11:30 बज रहे हैं, एंड एज ऑलवेज हम हमेशा स्ट्रीम से पहले करते हैं कि 11 बजे तक कर लेंगे, रैप अप हो जाएगा. बट नहीं, आई थिंक वी स्टार्टेड लेट ऑल्सो ना, तो हाँ ठीक है, उस हिसाब से 1 What घंटा. time did we start? We started at 10:20ish 12:45. 10:20ish आई गेस, पता नहीं. ठीक है, सही है, It's अच्छा है. 2 p.m. sir, so हाँ सही है. I have the rest of the day in front of me. But Yeah. yeah, I'm glad we did this. I feel so much better. Thank Yeah. you. कोई पूछ रहा था मेरी लास्ट सोलो स्ट्रीम में कि तुम लोग क्यों इतनी फ्रीक्वेंट स्ट्रीम्स करते हो, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रीमिंग, यू जस्ट हॉप ऑन. एंड आई वाज सो टेम्प्टेड टू से कि लिसन, द थिंग इज वी डोंट गेट पेड इनफ टू गो टू थेरेपी, कांट अफोर्ड थेरेपी, दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट Yeah. ऑप्शन. Yeah. नहीं, I kind of feel कि if I go to therapy then I won't be able to stream anymore, क्योंकि दिमाग का कचरा जो है उसी से तो कंटेंट निकल रहा है सारा. तो अब अगर मैं सारा साफ़ कर लूँ तो फिर कंटेंट ही नहीं निकलेगा. तो या स्टे टॉक्सिक, स्टे कंटेंट रिच. God, no. Yeah. Yeah. You Yeah. gotta hold on to like the spicy. Yeah, live for the drama. Mm. Yeah. So, when you think we'll stream next? I don't know. Like, I think we should try and stick to once in 2 weeks for sure. Last week हम करते, but last week थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मेरा Oh, last week yeah, I was. yeah, I don't even know where I was, but yeah. yeah. Last week नहीं was नहीं, fun. last week we were supposed to do a quiz stream with some guest, and we had to like juggle things around because बहुत ज़्यादा सीन हो गया था at work. सो वो इंटरेस्टिंग ये था, बट हाँ आई थिंक ये काटना पड़ेगा स्ट्रीम से. बट या मिस्टर पिंक कह रहे हैं से येस टू कंटेंट एंड नो टू थेरेपी. यस, इसकी मुझे Mr. Pink gets it. या इसकी मुझे टी शर्ट चाहिए एक. जैसे वो होता है ना, people write text in the most confusing manner, and it's like this is the easiest I could make it, and it's like some confusing shit. तो उसमें एक this is one of my favorite memes. उसमें लिखा होता है, किसी दुकान पे साइन था, say no to yes, and it's something that I believe in wholeheartedly, that yes, you should always say no to yes. And Okay. yeah, I think वो कुछ ऐसे say no to drugs या ऐसे कुछ तो था, तो उन लोगों ने Yeah. उसको बना के say no to yes लिखा था. Yeah. So yeah, say no to yes is something that I agree with. And No, what my go-to advice right now in my head is every time I text you with some problem, you always tell me what doesn't kill you gives you content. So that's what works I'm every doing. single time. Yeah. Mhm. Yeah. मैं मतलब इतना फालतू का ज्ञान देता रहता हूँ, मतलब आई हैव सो मेनी लाइंस. इसकी कोई टी शर्ट क्यों नहीं बना बना रहा, लो. सारा काम मैं ही करूँ. उसमें मेरे को वो याद आ गया, कहो ना प्यारे वाला वो याद आ गया. उसमें वो होता है ना, ऋतिक रोशन बोलता है अच्छा सारा काम मैं ही करूँ, एंड पता नहीं ऐसी कुछ तो लाइन था, नहीं राजपाल यादव का वो था उसमें एक्शन Yeah. रिप्ले में, वेर यू आस्क हिम टू डू एनीथिंग, ही जस्ट से सारा काम मैं ही करूँ, एंड देन ही वोंट डू इट. सो आई थिंक या Yeah. You know, one of the things that I wish we'd spoken about, I don't know if we still have the the time. coffee was great, and we met श्वेता त्रिपाठी there. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड अभी श्वेता मैम के साथ गेस्ट एपिसोड भी आ रहा है चैनल पे. सो बहुत हो गया अभी, चुप कर, हो गया, अब इनको बंद करो. बंद करो. Yeah. Yeah, I'm telling you now, chat is so self-sufficient. They'll come start the stream, end it, everything. Yeah. They call the shots. Yeah. Yeah, I think at some point, like when we get comfortable with the whole OBS and everything, we'll try and do a session with, like, we'll take everyone in, and it'll be the most chaotic thing, but देखते हैं कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा उसमें से, है ना.
तो Yeah. आइदर यहाँ करेंगे या डिस्कॉर्ड पे करेंगे. और वी आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद ट्विटर नाउ, क्योंकि अभी ट्विटर स्पेसेस पे हम काफ़ी एक्टिव हैं. तो यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर ऑफ ट्विटर स्पेसेस एंड अ लॉट मोर ऑफ ट्विटर स्पेसेस विद नेटफ्लिक्स इंडिया, क्योंकि अभी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है उनके साथ. तो वी हैव हैड 2 स्ट्रीम्स देयर, सो डू कीप एन आई आउट ऑन ट्विटर. एंड दिशा ने भी ट्विटर अकाउंट बनाया है, सब लोग जाके दिशा को फॉलो कीजिए ट्विटर पे. एंड और क्या I mean, प्लग करना. don't actually. I'm very scared of my Twitter. I हाँ. think that's giving me too much power. Pata nahi what I've been staying away from because I don't know what I'm gonna say. नहीं ठीक है, एज लॉन्ग एज ठीक है. आई यूज टू ट्रीट ट्विटर एज लाइक द वन प्लेस वेर आई कुड स्टोर ऑल माई थाट्स, क्योंकि कभी कभी वो चल जाते थे एंड कभी कभी नहीं चलते थे. तो आई कुड जस्ट लाइक, क्योंकि फॉलोअर्स ज़्यादा थे नहीं. बट अभी थोड़ा भी सिंस फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग एवरीथिंग, अभी थोड़ा सा वो हो गया कि अब जब आ ही रहे लाइक्स तो वाई नॉट गेट मोर लाइक्स, बिकॉज दैट्स हाउ लाइक्स वर्क. तो या फन. Like I didn't realize that like people can also see the tweets that you like. हाँ. And I was out there liking some very weird stuff, and my friend was like, "You know that people can see this, right?" So Yeah. I'm like, yeah, Yeah. yeah. नहीं यार, it's great to have someone who keeps a track of your likes. It means that you God, are yeah, I need that. cared for and valued for. But नहीं यार, जैसे अभी मैं वही कह रहा था कि if I went to therapy there won't be any content. तो अभी मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड स्टार्ट किया है which is basically journaling, but I'm using my inner mental issues for content. So the Twitter thread is basically that every day when I wake up there's some song playing in my head, and over the past few days it's become extremely random. मतलब कोई भी कुछ भी गाना बजता है. तो अभी मैं ट्विटर पे ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू डू दिस लाइक फॉर अ मंथ और सो. एंड किसी ने पूछा भी था कि इसकी प्लेलिस्ट बनेगी क्या, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा. बट इफ़ इट्स जूसी इनफ एंड बहुत ज़्यादा अगर केओटिक मेरा दिमाग रहा तो मैं बनाऊंगा प्लेलिस्ट, बिकॉज आई वांट टू सी कि इज़ देयर अ पैटर्न टू दिस और इज़ दिस लाइक कम्प्लीटली रैंडम. And I want everyone's help to kind of see if there is any pattern to this or not. So there is that. I'll be there. Yeah. Yeah. Keep an eye out for that. Even my video is, I think it's gonna drop this week. जो yeah, reading वाला. reading वाला. Nice. Yeah, I've been working on that for a while, and finally इस हफ्ते आ जाएगी. Nice. आज कौन सा डे है? आज तो संडे है. Okay. अभी तो उसकी बात नहीं कर सकते ना, कल संडे है के बारे में. Yeah. Elite reference, but yeah, I used to look forward to kal Sunday, but I don't think that's going to happen. My friend sends me that Friday है आज वो वाला. हाँ, Friday वाला तो every Friday without fail. So when he doesn't send it to me, I have to check up on him. Ki you good? Yeah. Nice. हाँ, फ्राइडे वाला तो यार काफ़ी लेजेंडरी मीम है. वो आई हैव एन आइडिया अभी टू लाइक, क्योंकि हमारी काफ़ी ऐसे डेडिकेटेड कम्युनिटी है, राइट. एंड अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओपनिंग म्यूज़िक वगैरह के साथ. तो हम चाह रहे थे, एंड दिशा आप बताओ इफ़ यू अग्री विद दिस आइडिया और नॉट, कि अगर हमारा एक ओपनिंग थीम सॉन्ग जैसा कुछ होता, एंड अगर आप में से कोई है जो हमारी मदद करना चाहते हैं इसमें, तो व्हाट डू यू थिंक? Should we ask people for this, or should we come up with something on our own? Absolutely, yeah. I mean, this stream is for the people, by the people, of the people. हाँ, उतना डेमोक्रेटिक तो नहीं है, बट श्योर. बट अच्छा सजेशन होगा तो हम डाल देंगे. Why not? हाँ, मतलब if copyright free होना चाहिए ना, but हाँ नहीं, I'm saying that if anyone wants to help us make one, and absolutely, yeah. So if there's anyone out there who's interested in like music production, animation, anything, and agar if you can help us make a DISHAHIN intro animation / music, then will you write a jingle? Anything, जो भी मतलब
You worked in yeah, Yeah, advertising. नहीं नहीं नहीं, I don't want it to come from us because then it'll be like in a box. So because Mix. yeah, so if there's anyone who would like to take this up, and the incentive is that if the track is great and like everyone likes it, then we'll get you on stream and अपन करेंगे कुछ, है ना. एंड नहीं, हम Hmm. डन का भी कुछ इंसेंटिव सोचेंगे, बट या दैट्स द आइडिया Yeah. सो फार. इस पे सोचते हैं Yeah. थोड़ा और. No, you'll forever have the credits on our stream का हाँ हाँ ये. हाँ, फॉर लाइक परपेचुटी. नहीं, परपेचुटी नहीं, 1 year यूजेज. तो या. Satyajit is saying contact that Yashraj guy. But yeah, I mean, if we can make something like that, that would be या आई थिंक okay. या दिस Yeah. I'm Come trying on to in. think कि इसका आज टाइटल रखेंगे क्या, क्योंकि आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने दिशाहीन रखा है सब कुछ, तो इसमें से But कुछ नहीं see, I निकलने think वाला. like I'm trying या to focus on the fact that there were no awkward pauses at least. Like, या what is important to us? Meaningful conversation or नहीं, वो तो कल सुबह पता चलेगा, बट अरे यार, I'm turning the phone off. या. But yeah, I'm trying. I don't know. Traveling was discussed. Traveling, bad luck. Travel movies. This everything was about like around traveling, I guess. Like at least Yeah. the first half was. बाद हमने क्या बात की पता नहीं. Toddlers and tiaras. या डिप्रेसिव I don't know चाइल्डहुड. who does the chapters for our streams, or they even do we do it? No, no, Like, Akash does it, and oh, हाँ. can you So imagine him yeah, having to yeah. say? And Akash texted me before the stream कि जब live जाओ तो बता देना, because Akash is not in a condition right now कि उसे पता चले. तो I'm imagining the kind of situation that he'll be in tomorrow when he watches this. God. So yeah, Akash, love you, and this is entirely for you. सभी जो भी है चैट में एक बार आकाश ओपी लिख दो. आकाश Akash हमारे Rupi. या Let's आकाश go, guys. हमारे सोशल मीडिया मैनेजर हैं, एंड ही डज. अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं तो we've been running a very cool series which is based on frames from movies. तो अब हम उसमें म्यूज़िक recommend करते हैं. We have done a lot of emotion based stories as well, and all of it is curated by आकाश. तो सभी जाके इंस्टाग्राम पे आकाश को बोलो कि आकाश भाई तुम मस्त काम करते हो. सो या. Yeah. Akash really puts up with a lot of our shit. But yeah. Yeah. Great. I think this was a great Sunday and this was a great stream. And अगली स्ट्रीम में हम कोशिश करेंगे कि कुछ गेम या कुछ कर सके इंटरेस्टिंग. तो लेट्स सी, और इट माइट एंड अप बीइंग अनदर वन ऑफ दीज स्ट्रीम्स, यू नेवर नो. तो या, Yeah. द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द की. या Oh yeah. कूल. बट हाँ, ठीक है. अभी थोड़ा थोड़ा रेगुलरली इसको करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं तो एराटिक हो जाएगा. एंड देन यू नो द वियर्ड थिंग इज़ कि आप ऐसे हर 2 हफ्ते बाद हम अगर स्ट्रीम करें ना, तो हर 2 हफ्ते में हमें कम बैक करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक वेरी वियर्ड कि वी यू डू वन स्ट्रीम देन यू डिसअपियर देन यू कम बैक. सो एवरी स्ट्रीम इज़ अ कम बैक. तो Yeah. But when was our last stream? I think we were. That was on time. No? We just missed one. अच्छा, 3 हफ्ते हो गए. हाँ, हमें 2 स्किप करने थे, हमने 1 एक्स्ट्रा कर दिया. वो तो खैर चलो मेरी वजह से ही हुआ, बट या ठीक है. Even I wasn't available. I was just so happy कि आपने पहले कह दिया कि I'm not. आई थिंक वही हमारा भी लाइफ इतना सिंक हो गया ना कि देयर इज समथिंग लाइक द chaos is always consistent. So I think that's something that has happened because of this stream. So yeah, it's the real multiverse of madness. So cool, great. Thank you everyone who joined. Yeah. And Goodbye guys. yeah. Good night. good night and खुश रहो, खुशहाल रहो, क्योंकि क्या पता कल होना हो. Cool. ओके, अभी मुझे एंड करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा ना OBS में. ओके आई हैव. नहीं वेट. Still live. हाँ नहीं वी आर स्टिल लाइव. अच्छा हाँ, अभी तो ऑफलाइन है भी है ना हमारे पास. ठीक है, मैं अभी ऑफलाइन जा रहा हूँ. 3, 2, 1.